Okay, welcome back to the marathon session. This is Saurav Pathak, and I'm again starting with from question number 401 because we have already completed 400 marathon questions of microeconomics in the previous marathon session. So, starting from the rest of the questions, I hope that my audio and video is properly visible to everyone. So, first of all, let me check it myself, then we'll continue with the class session. Let me share the class link to the required students. Okay. So here, starting from the question number 401, let me check. Okay. So we have already finished 400 questions. So starting from the question number 401, the degree of monopoly power can be measured by formula. So here it is asking about the degree of monopoly power. The degree of monopoly power. So here the degree of monopoly can be measured from the formula P minus MC upon P, or you can rewrite it as AR minus MC upon AR. Why? How it can be? So degree of monopoly means how much gap you are having in between price and marginal cost. How much gap? Okay. See, if I talk about for the case of perfect competition. So here in the case of perfect competition, what happens? This is the demand curve. Is equals to price is equals to MR is equals to AR is equals to MC. This is not, it used to why MC, because this is the only equilibrium point, because this is only the MR curve. MR is equals to MC. This is the equilibrium point. Okay, and here is the average cost. So this is the main point. Here what happens at this equilibrium point? Price means AR is equals to price is equals to MC, means AR is equals to MC. यहाँ पे होता क्या है कि AR जो है कि MC के बराबर है. AR यहाँ पर क्या है कि MC के बराबर है. तो यहाँ पर होगा क्या? MC means AR is equals to MC is equals to price. So what will be happening over here? Here the condition will be something. Like P minus P upon P, means P minus P, it will be 0 upon P. तो यहाँ पर it will be 0, means the degree of monopoly power in the case of perfect competition will be 0. यानी perfect competition में कोई भी monopoly नहीं होती. Perfect competition there are number of firms who are working on normal profits. They do not have any monopoly power. They are only having very small share as compared to the share of whole industry. Okay, so here, but in the case of monopoly, what will be happening here? If I talk about marginal cost is very less than the price, because their price is very much high. If I talk about, let me draw the diagram of monopoly case. So if I take red color, and if I'm like this, I'm drawing it like this. Okay, on whole screen. So if I talk about, so here in the case of monopoly, this is AR curve of double slope, this is MR curve. Okay, here
then what happens? MC goes like this. Okay, so where MR is equals to MC, this is the equilibrium point, and from this equilibrium point it will be going to this is the equilibrium point E, it will be going to AR, and this is the price, okay. So can you imagine, this is the price and this is their marginal cost of equilibrium, okay. So this much they are, means they are having this much gap in between price and marginal cost, okay. So therefore this is the monopoly power, means they can what they can do, they can reduce their price as much as they want, like here they can come reduce this much, है ना. So this all price they are having, means this is their monopoly power, means they can, if any newcomer is coming in the market, so they can reduce the price to vanish that, okay. Moving ahead to the question number 402. If I talk about 402, moving ahead with the question number 402. Here bilateral monopoly means, two rival sellers only, two rival buyers only, a monopoly seller buying his input from many suppliers, a monopolist facing a monopolist, okay. So here, so bilateral monopoly is something where the thing is that there is single buyer and single seller, there is single buyer and there is single seller, so this is termed as bilateral monopoly, okay. So two rival sellers only, this is wrong, there is no two rival sellers, two rival buyers only, this is wrong. A monopoly seller buying his input from many suppliers, this is also wrong. This is monopolist facing a monopolist. So who is monopolist? Monopolist is single seller. No, it is single buyer, I think. Monopolist. Monopolist, it is single buyer. Okay, so a monopolist facing a single buyer, okay, means the selling there is only one company who is selling the product and there is only one buyer. Like good example is railway. So railway is the one who is manufacturing parts of itself, and railway is the one who is buying those parts, okay. So railway can be the example of monopoly sector, okay. Railway can be the example. Okay, so here if I talk about question number 403, a monopolist who is selling in two markets in which demand is not identical will be unable to maximize his profits unless he. So here it is talking about a monopolist who is selling in two markets, यानी यहाँ पर what is the thing, monopolist जो है कि वो who is selling in two markets in which demand is not identical, यानी demand is not similar, will be unable to maximize his profit unless practice price discrimination. So what is price discrimination? Price discrimination is the selling of the same product at different prices in different market, okay. So this is termed as price discrimination. So the answer will be practice of price discrimination. Equates the volume of sale in both market? No. Equates marginal cost with marginal revenue in only market? No. So here the monopolist should be practicing the price discrimination in the markets, okay. Moving ahead to the question number 404. Moving ahead with the question number 404, if I talk about
So here, question number 404, if I talk about, so the firm enjoys maximum control over the price of its product under. So the firm enjoys maximum control. The firm enjoys maximum control over its product under monopoly, perfect competition, oligopoly. So I was checking the answer of 403. So I put it B. Let me check it. 403. It is B only. Okay. So question of 404. It is saying that a firm enjoys maximum control over the price of its product under monopoly. It is not on perfect competition. The firms are price takers. Oligopoly, imperfect competition. In the case of monopoly, what monopoly does, it used to control over its output. Okay, they used to, if they do want to take high prices, what they used to do, they used to increase or decrease the output. Okay, if they'll decrease output by very big quantity, then what will happen, the output will be very limited, means supply will be very limited, automatically the prices will be coming very high. So here it can be monopoly, oligopoly, imperfect competition. So if I'll go, then if firm enjoys maximum control, so maximum control is done by monopoly. So question number 404, correct answer will be A. 404 A. It is A only. Moving further to the question number 405. Under bilateral monopoly, the price is higher if, under bilateral monopoly को मैंने बताया कि सिंगल सेलर सिंगल बायर है, तो वहां पर होगा क्या, प्राइस इज हायर इफ मोनोपोलिस्ट हैज हिज वे, मोनोपोलिस्ट एक्ट एज ए कॉम्पिटिटर, मोनोपोलिस्ट यानी जो बाय करने वाला है, हैज हिज वे, अब वो अपने रास्ते पे है, मोनोपोलिस्ट यानी वो अपनी बात बनाना चाह रहा है। और यहाँ पर होता भी यही है कि एक टाइम के बाद जो है कि देर आर सम पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस और देर आर सम uneconomic factors who decides the price in the case of bilateral monopoly. Okay, after all, the monopolist sells his own output in a monopoly market. Monopolist sell his own product in the monopoly market. How it can be possible? Monopolist is a buyer, and buyer will be selling the product. Then under bilateral monopoly, the price is higher if monopolist has his way. Monopolist act as a competitor. See, prices are higher if monopolist who is selling has his way. It means he is on his own way, that he is very much not allowing to the buyer to buy on the down prices. Okay, so then they can be the monopoly, the prices will be higher. So I think I'll go with the option A. 405. It is A only. 405. Okay, moving ahead with the question of 406. So one equates price and marginal cost to maximize profit. Question number 406. One equates price and marginal cost to maximize profit. The other one equate marginal cost and marginal revenue for the same purpose. They are, see, so here the thing is this, that in a monopolist they equates because to measure it P minus MC upon P. This is the monopoly power. So in the case of monopoly firm, I think they used to measure the price and with marginal cost, but at the same time in the case of perfect competition they used to measure MC, MR is equal to MC. Okay, so I'll go with this. It will not be monopolist because it is a buyer. Okay, so it will be monopolist and perfect competitor. Oligopolist, no, it will be A. 406, it will be A only. Okay, because in the case of monopolist they used to compare price with marginal cost. Okay, in the case of perfect competition they used to compare MR is equal to MC. Okay, moving ahead with the question of 407. The equilibrium level of output for the pure monopolist is where? The equilibrium level of output. So equilibrium level of output for the pure monopolist. If I talk about pure monopolist is who
who is having, if I talk about, then it will be monopoly, okay, who is a single seller. The equilibrium level of output for the monopoly is where, so it is same for them all. MR is equals to MC. It will not be MR greater than MC or okay. So it is talking about output. So output, as I told you earlier, it is AR, it is MR, so this will be the level of output, okay, where MC is equals to MR. This is the equilibrium, and from here they will go to make the price, okay. So here MR is equals to MC. 407, it is A. 407, it is A only. Moving to the question number 408. 408. So here, if the price is statutorily fixed and equal to MC, if the price is statutorily fixed and equal to marginal cost, monopoly profit will be means equal to price, means AR is equals to MC. AR is equals to MC is equals to price, means monopoly profit will be. So here prices are fixed, means AR is equals to MC. AR, MR, MC. So here what is the thing, that AR is equals to MC, means this will be the point. This is P. AR, MC. No. AR price is statutorily fixed and equal to MC. Price is equal to MC. So condition should be this, that condition should be this, that this is the MR, this is MC, and this is MR. So MR equal to MC. This is the equilibrium point. This much output they will be producing, and when this much output they will be producing, then they will go with this much price. Price will be this much, and output will be this much. But here they are saying that if the price is statutorily fixed and equal to MC, price is equal to MC, this one here only, this is the only point where MC is equals to AR is equals to price, okay. So monopoly profit will decrease automatically, because they will be, what they will be doing, at the case of this much profit, they will be taking, on the case of this much price, they will be taking a bit less price, okay. So it will decrease. 408, it is B. 408 is C. Eliminated. Monopoly profit will be eliminated. चलो, तो यहाँ पर ये eliminated है, उसका कारण है eliminated मतलब जो है कि वो उसको eliminated निकाल दिया गया, निकल गया, खत्म हो गया। मोनोपोली प्रॉफिट जो है कि वो खत्म हो गया। अगर जो है कि इन्होंने ख़त्म कर दिया है, और ख़त्म करने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर AR, यहाँ पर दिस विल बी द कंडीशन, here what will be the thing here, okay. So let it be C only, and I do want to prove it that it is C. So let me draw it again. So some of the questions are there, so which takes a bit time, and some of the questions are like that who takes only seconds, okay. So let me draw the diagram again. So if I talk, this is AR, this is MR, this is AR, and this is MR, this is AR, and this is MR, and now what is the thing, price is certainly fixed and equal to MC. Monopoly profit will be this is MC. So earlier the equilibrium will be this, and price will be this one, okay. So quantity will be this much, okay. Now when it is, so where will be the average cost? So average cost will be very much less, here equals to MC. Okay, so I'll come back with this particular question, because here I think the profit will be decreased, okay.
but it is saying that profit will be ultimately eliminated, means there will be no profit. So how monopoly will be working in no profit? Okay, so not an issue. I'll come back with this question, particular question 408. Question number 409. Question number 409. Question number 409. Question number 409. Given the cost condition, monopoly output and price will be higher than under pure competition. Given the cost condition, monopoly output and price will be higher under the pure competition. Given the cost condition, monopoly output and price will be higher. Monopoly output and the price will be higher under the pure competition. Okay, monopoly output, if I talk about monopoly output, monopoly output and price will be higher than under pure competition. So here, no, output will not be high, because in the case of pure competition, output is something like this one. But in the case of the, if I draw the same diagram, so here AR curve will be like this, MR is like this, and output will be a bit less in the case of monopoly. Okay, because then only there will be higher prices. Because then only there will be higher prices. Okay, so here what will be the thing? Monopoly output and price will be higher under pure competition. So monopoly output will be high, and but in the case of pure competition, prices will not be high. Okay, so moving to the next under cost condition, given cost condition, monopoly output will be lower and price, monopoly output will be lower and price higher than under pure competition. Okay, this one is correct. 409, this one is B is correct, B statement. Let me go with the C also. Monopoly output will be higher and prices lower. No. How can the monopoly prices will be lower than perfect competition? Monopoly output and price, monopoly output, if I talk about monopoly output and price will be lower. Monopoly output and price will be lower. No. Price can't be lower. So option B will be correct. Question number 409, option B will be correct. Option B. It is option B only. Okay. So question 410. Question 410. A monopolist will fix the equilibrium output of his product where the elasticity of his AR curve is. Monopolist will fix the equilibrium amount of profit. Monopolist will fix the equilibrium output of his product where elasticity of his AR curve is greater than. So here the condition is this, that AR, so this is the point, means midmost point of AR curve has elasticity equal to 1 and the lowermost point has elasticity equal to 0. So the point in between midmost and the lowermost, here the value of elasticity is less than 1. Okay, so they won't be producing. Why? Because in this case, after midpoint, the value of marginal revenue comes to be negative. Okay, so therefore they won't be producing at the point below the midpoint. Okay, so here if I talk about, in the case of a monopolist will fix the equilibrium output of his product where the elasticity of his AR curve is greater than or equal to 1, equal to or less than 1. It won't be less than 1. It won't be less than 1. Okay, so B will not be there. It can be greater than or equal to 1, less than 1 but more than 0. Less than 1, no, less than 1. This is talking about this range. So in this range they won't be producing, because here the slope of MR curve will be, after that it will be negative. Okay, so we have already done one of the question like this. Okay, so it was simply asking this only. So on the behalf of that also I am saying less than 1 and more than 0, it cannot be. Option C will also be correct. 0, no. So here the correct option will be A only. Question number 410.
question number 410, it will be option will be, or correct option will be A only. Correct option will be A only. 410, but it is showing C. It is showing C. It is C. Officially it is given C. Less than 1 but more than 0. Yani here is there any monopolist will fix the equilibrium output of his product where the elasticity of his AR curve is. Monopolist will fix the equilibrium output of his product where the elasticity of his curve is, of his AR curve is less than 1 but more than 0. Less than 1 but less than 1 but more than 0. Okay, so here in this case what will you think? In this case I don't think so that there will be equilibrium point in this region. But after all I think so. I think this only, that if you think emotionally rather than this condition, okay, um, or economically too, when the region where elasticity is more than 1, it means that the product is elastic. Elastic means elastic means elastic means when prices will be changed by a bit, by this much, then quantity decrease will be by this much because it is elastic. So therefore I think monopolists won't be working in the elastic region. They will be they would be they would like to work in elastic zone, where the value of elasticity will be less than 1, because at the time, in the case of inelastic demand, what will you think? The change in price, they will be changing price by this much, and demand will not be changed by this much. Demand will not be falling by this much. Okay, demand will be falling by a very less quantity, so they won't be having, so that they don't won't be suffering from losses. Okay, so therefore only I think here the option C will be correct. But as per one of the question in this only, the it was saying that when the elasticity of AR curve is less than 1, the MR comes to be negative. Therefore they won't be working in this region. So question again, I'll read. A monopolist will fix the equilibrium output of his product where elasticity of his AR curve is less than 1 but more than 0. Okay, moving ahead with the question number 411. The monopolist shifts the SEC and SMC curve because monopolist shifts the SEC and SMC curve. SEC means short run average cost, SMC means short run marginal cost curve, because of the imposition of per unit tax. Because when per unit tax will be per unit tax here, when per unit tax will be applied, okay, then it used to change the variable cost, because it is applied per unit. It is not applied on the fixed cost, because it is not applied on the fixed cost. Okay, it is not applied on the fixed cost. Okay, so I hope now it's fine, because there was some network fluctuation. Now I think it is fine. So here I was that time I was on the question number 411, I think.
but now I'm on the question number, means I skipped a number of questions from 411 to 429 I think. Oh, सब तो skip हो गया है. I done all these questions. I done all these questions, and due to network issue, everything gone wrong. I done all these questions. See. So due to network issue, it was till class till 411, and then I remained teaching, and I done all these questions from 11 to all these questions. Okay, and then so okay, so okay, not an issue. I'll start from where I am right now, and rest of the questions I will be doing in the another class. So here I was doing question. I think which one question I was doing? I was doing question number 428. Okay. So question number 428, it is saying that which of the following statement is not true with respect to the firm in circumstances of imperfect competition. So the correct option is MR is equal to price at all output levels. So this will not be there in the case of imperfect competition. This will be only the case of perfect competition. So question number 428, the correct option is C only. Moving to the question number 429. Moving to the question number 429. Moving to the question number 429. Here it is. If I check, which of the following economists said that the problem of bilateral monopoly has a solution if? Which of the following economist? Here it is saying that which of the following economists said that the problem of bilateral monopoly has a solution if the monopoly buyer of the factor sells his own product in a monopoly. यानी जो मोनोपोली बायर यानी जो इकलौता बायर है वो क्या करे, बेचने लगे अपना ओन प्रोडक्ट इन द मोनोपोली. यानी हाँ बिल्कुल बात सही. देखो अब यहाँ पे है क्या, बायलैटरल मोनोपोली एक समस्या ये होती है कि देखो एक ही यहाँ पर सिंगल सेलर है और सिंगल बायर है. तो बेचने वाला कहता है कि देखो मैं इकलौता बेचने वाला हूँ तो आप जो है मुझसे ही आपको लेना पड़ेगा, मैं कितना प्राइस रखूँ. बायर करता है कि मैं ही तो खरीदने वाला हूँ, तुमसे लेगा भी कौन, तो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना प्राइस रखो. तो ये प्रॉब्लम बन जाती है बहुत बड़ी. वो अपने पे अड़ा, वो अपने पे अड़ा है. तो यहाँ पर होता क्या है कि किसी ऑथर ने कहा है कि आप एक काम करो, जो खरीदने वाला है तुम अपनी खुद की कंपनी बना लो, खुद ही बेचो और खुद ही खरीदो, है ना. जैसे कि रेलवे है तो ये वाली बात है यहाँ पर. तो यहाँ पर कर्नट है, कैल्डर है, मार्शल है, हेस्क है ना, 429 का. तो यहाँ पर जो है कि आपका ये जो आपके कर्नट है ना, कर्नट डोपोली मॉडल जो कि इन्होंने अपना है ना 1838, ठीक है. तो इन्होंने जो है कि बायलैटरल मोनोपोली में कहा था कि जो है कि अगर बायर जो है कि खुद ही यानी मोनोपोली बायर है वो अपना खुद का ही प्रोडक्ट बना के बेचने लगे, खुद ही मोनोपोली क्रिएट कर ले, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है ना. तो यहाँ पर 429 हो जाएगा, 429.
करेक्ट ऑप्शन विल बी 4 to 9. ठीक है. मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 430. मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 430. तो यहाँ पर मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन अकर्स व्हेन. तो यहाँ पर ये बात चल रही है मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन की. तो मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि जो बायर है ना, सिंगल बायर, वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और मतलब उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. अकर्स व्हेन द फैक्टर मार्केट इज मोनोसोनिस्टिक, फैक्टर मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, प्रोडक्ट मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, प्रोडक्ट मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक. तो यहाँ पर जो है कि अगर कॉम्पिटिटिव है तो फिर एक्सप्लॉयटेशन की कोई बात ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव है नहीं तब होगा. तो यहाँ पर फैक्टर मार्केट इज मोनोसोनिस्टिक. तो मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन कब होता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट मार्केट में जो है कि वो मोनोपोलिस्टिक है. वो प्रोडक्ट मार्केट अकेला सेल में बेचने वाला है, तो वो क्या करता है, बायर का एक्सप्लॉयटेशन कर लेता है. 430 का डी हो जाएगा यहाँ पर. इट इज ए. 430 का ए है. तो ये तो खत्म कर दो दोनों परफेक्ट कंडीशन वाले. फैक्टर मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक, यानी फैक्टर मार्केट जो है कि वो भी वहाँ भी लैंड एंड जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर है वो सब वहाँ पर है क्या, या लेबर मान लो, तो वो जो है कि इकलौता ही बेचने वाला है लेबर, यानी वहीं से लेबर निकलती है और कहीं से नहीं निकलती है. तो जब वो अपना हायर प्राइस लेगा, जब वो हायर प्राइस लेगा तो ऑटोमेटिक जो है मोनोपोलिस्टिक जो है वो मजबूर हो जाएगा. जब उसको कॉस्ट ज़्यादा लगेगी तो फिर वो जो क्या करेगा, मोनोपोलिस्टिक का एक्सप्लॉयटेशन कर देगा. तो यहाँ पर जो है फैक्टर मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक. चलो ठीक है, 430 का ये हो जाएगा. 430 का करेक्ट आंसर इज ये. मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 431. Moving further with the question number 431, which of the following represent the AR curve of a firm? Which of the following represent the AR curve of a firm? तो AR curve जो है कि फर्म का कौन सा है, AR, PMR. तो which of the following represent the AR curve of a firm? The curve representing the cost per unit of output, यानी the curve representing the cost per unit of output, the demand curve of consumer for a firm's product. तो यहाँ पे बात चल रही है which of the following represent the AR curve, यानी AR कर्व कौन सा है ना. तो ये हो रहा है कि the curve representing the cost unit of output, the demand curve of a consumer firm of the product total. तो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा. 431 का बी, यहाँ पर जो आपका ये डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर ऑफ फर्म है वही आपका AR कर्व होता है. Very simple question. Moving ahead with the question number 432. So here the last coin creation of monopolist is expressed as. तो यहाँ पर जो कि least cost creation, least cost criterion of monopolist is expressed as. तो यहाँ पर MPL upon MPK MP. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये वाला अगर मैं करूँ रिराइट तो ये आपका आएगा MPL अपॉन PL इज इक्वल टू MPK अपॉन जो है कि आपका. तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर किसके लिए, ये आपका मोनोपोलिस्ट के लिए है. तो मोनोपोलिस्ट में होता क्या है, ये आपका मार्जिनल एक्सपेंडिचर लिया जाता है, वहाँ पर है मार्जिनल कॉस्ट. तो यहाँ पर MPL अपॉन MPK, नहीं ये गलत हो जाएगा. MPL अपॉन PL और ये भी गलत हो जाएगा. MCL अपॉन क्या है भैया, 432 का ए होगा क्या, 432 का ए कहाँ गया है, 432 का बी है. एक मिनट, ये MCL वाला ही सही है, क्योंकि यहाँ पर ये तो आपका हो जाता है, ये तो निकल के आया है ना ये वाला. ये जो है कि एक्चुअल में MPL अपॉन PL ये आपका बेस्ट प्रोडक्शन या MPK अपॉन, जैसे कि जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वैसे ही यहाँ पर जो है कि प्रोडक्शन के केस में इस तरीके से आपको लैंड जो लेबर कैपिटल है उसको आपको लेके चलना है. बी वाला जो है कि MCL मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर. तो यहाँ पर इसको अगर करेंगे रीराइट या ऐसे ही इसको देखते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बहुत सही है ये, मैंने इसको सही से देखा, ध्यान नहीं दिया इस पर. ये सही है क्योंकि यहाँ पर कॉस्टिंग के हिसाब से कंपेयर करेंगे हम अपना उसके प्रोडक्टिविटी को. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी को डिवाइड करेंगे उसकी कॉस्ट से, और वो बराबर होना चाहिए कैपिटल की प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाई कैपिटल की कॉस्ट.
है ना। तो यहाँ पर जो है कि ये अब देखिए ये जो प्राइस है, बात ये भी सही है, एमपी के यानी एक मिनट, ये प्राइस ऑफ लेबर, तो ये भी उसकी है तो कॉस्ट ही, ये भी उसकी कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पर हमने मार्जिनल कॉस्ट ली है। प्राइस जो है कि आपकी एवरेज शायद हो जाता है एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो मोनोपोलिस्ट की बात चल रही है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 433, क्वेश्चन नंबर 433, क्वेश्चन नंबर 433। तो यहाँ पर द फिगर बिलो एक्सप्लेन्स प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन अंडर। तो यहाँ पर ये मार्जिनल वेज है, ये सप्लाई है, ठीक है ना। तो ये कौन सा वाला केस है, ये कौन सा वाला केस है भैया? प्योर मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है। ये कौन सा वाला है केस? ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है, ये एमआरपी। वीएफपी क्या होता है? एमआर इंटू एमपीएल, एमपी एआर इंटू एमपीएल। तो यहाँ पर मार्जिनल वेज है, ये सप्लाई इस तरीके से है। तो यहाँ पर अब एक्चुअल में थोड़ा सा ये थोड़ा स्किप हो गया है मेरे दिमाग से, और ये बहुत अच्छे से मैंने क्लास में अपनी समझाया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से। आप क्लासेस देखिए जाकर। तो यहाँ पर जो है ये जो है इसमें थोड़ा सा एक कुछ है डिफरेंस, और ये जो बना हुआ है ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये दो हैं, इनका हो जाएगा एक, और ये हैं ये दो, इनके दो हो जाएगा, तो कुछ उसका अलग हो जाएगा। फिर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर एमआरपी यही है, और वीएमपी, तो यहाँ पर एमआरपी रखा है, वैसे वीएमपी जो है। तो ये जो है मुझे मोनोपोली का, प्योर मोनोपोली का लगने लगा है, क्योंकि मार्जिनल वेज यहाँ पर अलग जा रही है, सप्लाई रेट अलग जा रही है। तो 433 का यहाँ पर ए होना चाहिए, 433 का यहाँ पर सी है। मोनोपोली मार्क, अच्छा तो मोनोपोली, ठीक है। तो आपका ये 433 का आपका यहाँ पर सी है। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये इट विल टेक अ वेरी मच हाई टाइम। तो वो आपके काम करिए, मेरी क्लास आप देख लीजिए आगे, ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार ये आप देखिए जाके फैक्टर प्राइस की मेरी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो क्लास है वो आप देख लीजिए आगे, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जो कि मैं खुद भूल चुका हूँ। यहाँ पर अब जो है कि 434, क्वेश्चन नंबर 434। तो हियर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अंडरटेकन विद द एम ऑफ, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अंडरटेकन विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पर इज अंडरटेकन विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, यानी सेल्स को बढ़ाना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, रिड्यूसिंग सेल एंड राइजिंग प्राइसेस, मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, सर्विंग मार्केट विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। तो ये तो कुछ नहीं, सर्विंग का सेवा थोड़ी नहीं करनी है, यहाँ पर अर्निंग सेल्स एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये आपका सेल सही है, 434 का ये हो जाएगा, ठीक है, इट इज ये। मूविंग फर्दर 435, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वर इंस्पायर्ड बाय। मॉडर्न थ्योरी जो है कि आपकी यहाँ पर जॉन रॉबिन्सन ने बात करी थी मॉडर्न थ्योरी की, 335 का ए हो जाएगा, इट इज बी, शराफा, ये बी है भैया। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात चल रही है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वर इंस्पायर्ड बाय शराफा, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वॉज इंस्पायर्ड बाय शराफा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका द स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोलिस्ट में असेस्ड बाय, तो मोनोपोलिस्ट की स्ट्रेंथ जो है कि गैप बिटवीन ए आर एंड एम आर, साइज ऑफ इज टोटल रेवेन्यू, ए आर और एम आर में गैप, ठीक है ना। द साइज ऑफ कंज्यूमर सरप्लस अकॉर्डिंग टू हिम, द लॉन्ग टर्म प्राइस ऑफ इस प्रोडक्ट। तो ये प्राइस जो है कि लॉन्ग टर्म का, इससे जो है कि उसका क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, पता लगता है, ठीक है ना। 436 का डी हो जाएगा, इट इज बी। एक मिनट, गैप बिटवीन ए आर एंड एम आर भैया, अच्छा
अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये जान के मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के। देखो ऐसा है कि देखो परफेक्ट कंडीशन में ये ए आर है और ये इसके ऊपर ही एम आर है, यानी कोई गैप ही नहीं, तभी जो है कि इस पर क्या है मोनोपोली को जो है कि स्ट्रेंथ पता है यहाँ पे, यानी जीरो स्ट्रेंथ है इसकी, जीरो स्ट्रेंथ है मोनोपोली के केस में। और वैसे यहाँ पे गैप ज़्यादा हो जाता है यानी ये वाला, ठीक है। तो वैसे जो है कि यानी होता क्या ए आर जो है एम आर के डबल स्लोप का होता है। ए आर जो है मैंने ड्रॉ करके नहीं देखा, अगर मैं ड्रॉ करके देख लेता तो तुरंत हो जाता है ये वाला आंसर। अब जैसे मान लो कि अगर लेट से कि ए आर मान लो हल्का सा है तो एम आर भी हल्के से होगा, यानी इतना गैप नहीं इनके अंदर है, क्योंकि इसके डबल स्लोप पे एम आर होगा। अगर मान लो स्लोप अगर ए आर का बहुत कम है, लेट से कितना है, तो ए आर का ऐसे होगा, यानी ज़्यादा गैप नहीं है। लेकिन अगर स्लोप ए आर का ऐसे है तो एम आर का ऐसे होगा, इससे डबल स्लोप का, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी गैप ऑफ ए आर और एम आर को क्या बताता है कि यहाँ पर जो है कि मोनोपोलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम जो है कि 436 का हो जाएगा यहाँ पर बी, मूविंग हेड विद द क्वेश्चन नंबर 437, 437 क्वेश्चन नंबर। सो हियर द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस इज डेवलप्ड बाय मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन चैम्बरलिन, फटाफट ई एच चैम्बरलिन, एच ई चैम्बरलिन ने ई एच चैम्बरलिन। 437 का ए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, फटाफट 437 का ए, 437 का ए, इट इज ई एच चैम्बरलिन, एच ई नहीं है, एच ई नहीं है, एच ई नहीं है, ई एच है। ए बी सी डी ई एफ ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई पहले आता एच बाद में आता, वही सही वाला है ये। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वेयर द फर्म इज अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, which of the following conditions are met in the long run equilibrium in monopolistic competition where the firm is earning only normal profit। तो यहाँ पर जो है कि बात चल रही है मोनोपोलिस्टिक की, लेकिन लॉन्ग रन में और नॉर्मल प्रॉफिट जो है कि अर्न करेंगे तो कौन सी कंडीशन मेट होगी। तो प्राइस इज इक्वल टू एम आर होगा, क्या होगा ए टी सी होगा, प्राइस इज इक्वल टू एम सी होगा, बिल्कुल बात सही है यहाँ पर, है ना। यही तो वाला यही तो होता है गैप, एम सी कम है प्राइस ज़्यादा, तो यहाँ पर जो है कि हो जाता है एम सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो अभी हम इसको देखो ऐसे करके देखते हैं। तो ये होता क्या है कि मान लो कि यहाँ पर इस तरीके से ऐसे 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 ये ए आर है, ये एम आर है, ये एम सी है, तो ये वाला ऐसे जाता है ऐसे करके ये प्राइस, तो ये वाला इनका ये वाला प्रॉफिट हो जाता है, ये वाला। अब लॉन्ग रन में प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट ख़त्म करना है, ठीक है ना, लॉन्ग रन में। तो ये प्राइस है और ये एम सी है यहाँ पर, तो एम सी बराबर अगर प्राइस हो जाएगा, यही वाला प्राइस हो जाएगा, तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे। एम सी का ए सी होगा, यानी एम सी ये है और ये ए सी बराबर हो जाएगा, यानी ऐसे करके यहाँ पे हो जाएगा। तो तब भी इनका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा यहाँ पर, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। प्राइस बराबर एम आर हो जाएगा, एम आर एम आर एम आर, नहीं उसका कोई मतलब नहीं है, ए टी सी एवरेज टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर या तो ए होगा या डी होगा, तो यहाँ पर जो है या तो ए होगा या डी होगा, तो आई विल बी गोइंग फॉर एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। देखिए यहाँ पर मैंने प्राइस करा था एवरेज कॉस्ट, ये वाला नहीं, डी वाला होगा। देखते हैं ये 438 का डी हो जा कहाँ है, 438 का बी है यहाँ पर, 438 का है बी करेक्ट। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ है, 438 का यहाँ पर बी है करेक्ट। 438 का बी, प्राइस इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट जो आपका हो जाएगा, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, यहाँ पर जो है जब हो जाएगा तब यहाँ पर क्या होगा, लेट मी चेक। ओके, सो हेयर हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर, सो इट इज प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का बिल्कुल बात सही है, तो ये मोनोपोली की बात चल रही है, और मोनोपोली में करते करते क्या है
ये वेरिएबल कॉस्ट पे तो काम करेंगे नहीं, तो एवरेज टोटल कॉस्ट ले लिया है इन्होंने, उतना प्राइस कर लेंगे तो उनका नॉर्मल प्रॉफिट निकलता रहेगा, जैसे कि उसमें होता है ना। ये आपका एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, और यही इनका प्राइस रहता है, तो ये लॉन्ग रन में चलते रहते हैं। चलो ठीक है, ये वाला आपका 438 का भी हो जाएगा। मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 439, मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 439, तो यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर है क्या, चैम्बर्लिन्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप मे बी डिफाइंड एज, चैम्बर्लिन का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप, चैम्बर्लिन्स concept of product group may be defined as product that have infinite cross elasticity of demand। तो चैम्बर्लिन का कॉन्सेप्ट है ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप, तो आपका ये जो है कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ग्रुप में बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट हैव इनफाइनाइट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्ट दैट आर क्लोज टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट्स। चैम्बर्लिन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप may be defined as product that have infinite cross elasticity, product that are close technical substitutes, होमोजेनियस प्रोडक्ट में डिफरेंट ब्रांड। अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। चैम्बर्लिन का मॉडल है, और यहाँ पर जो कि होमोजेनियस प्रोडक्ट की बात चल रही है, होमोजेनियस तो ये आपका 439 का, प्रोडक्ट दैट आर क्लोज टेक्निकल सब्स्टिट्यूट, ये वाला दे रखा है आंसर। चैम्बर्लिन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप may be defined as, चैम्बर्लिन का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप may be defined as product that are close technological, ये आपका होमवर्क एक बार देख लीजिए इसको, ये मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे प्रोडक्ट ग्रुप उन्होंने बताया है कि ऐसा प्रोडक्ट का ग्रुप है जो कि टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली एक्सचेंज करे जा सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, तो वो इनका प्रोडक्ट ग्रुप है चैम्बर्लिन का। चलो आगे बढ़ते हैं। 440 अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर कैन बी फ्रीडम ऑफ एंट्री इन द सेंस ऑफ फ्रीडम टू प्रोड्यूस। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर कैन बी फ्रीडम ऑफ एंट्री इन द सेंस ऑफ फ्रीडम टू प्रोड्यूस। तो ये जो है कि आपका यानी परफेक्ट कंपटीशन और फ्री एग्जिट फ्री एंट्री होती है, मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है कि देयर कैन बी फ्रीडम हो सकती है ऑफ एंट्री इन द सेंस ऑफ फ्रीडम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, तो सब्स्टिट्यूट आप बनाओगे, गलत हो जाएगा भैया, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ तब तो आपको फ्रीडम मिल जाएगी। अगर हमारा कॉम्पिटिटिव अगर आप प्रोडक्ट बना दोगे तो फिर भैया तुमको एंट्री थोड़ी देंगे, हमारा साथ का प्रोडक्ट बनाओ कॉम्प्लीमेंट्री को, तो तुमको आने देंगे, हम मौका देंगे। तो 440 का यहाँ पर सी हो जाएगा, 440 का यहाँ पर ए है। बहुत सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या होने लगा ये, यानी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर कैन बी फ्रीडम टू एंट्री इन द सेंस ऑफ फ्रीडम टू प्रोड्यूस क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी मैं बना रहा हूँ चाय, तुमको बनाओ कॉफ़ी, तुमको आने दें, ऐसा कैसे, तो हमारा धंधा चौपट करवाओ क्या। तो ये जो है मुझे पता नहीं यहाँ पर ये क्या चल रहा है। 440 का यहाँ पर जो है कि मेरे हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री गुड अगर बनाओ तो आपको मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एंट्री दे दूंगा, हालांकि एंट्री है नहीं, होती है एंट्री परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है भैया, तो यहाँ पर मैं इसकी नहीं मानूंगा, मैं इसको एक बारी मैं इसको अब एआई करूँगा जरूर, क्योंकि अब जो है कि ये सर से ऊपर होने लगा है, क्वेश्चन कई गलत होने लगे हैं। मैं देखता हूँ कि इनके आंसर प्रिंट गलत तो नहीं है। एक बारी मैं देखता हूँ उसको। अभी जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट आंसर क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट 440 ये है, इसमें ये दे रखा है।
In monopolistic competition, firms have freedom to enter the market, but they typically produce close substitute rather than perfect substitute. This is because products are differentiated, meaning each firm's product has a unique characteristic that distinguishes it from other in the market.